नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ड में सुभाष चौधरी हूं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज साप्ताहिक प्रेस वार्ता की और यह प्रेस वार्ता बेहद महत्वपूर्ण रही है क्योंकि इसमें कनाडा, अमेरिका, चीन, रूस, कई विभिन्न देशों से संबंधित भारत के संबंध, कूटनीतिक संबंध, सामरिक संबंध या फिर राजनयिक संबंधों को लेकर सवाल पत्रकारों द्वारा पूछे गए। एक पत्रकार ने रणधीर जायसवाल से पूछा, कनाडा के अधिकारी और मंत्री की ओर से हाल ही में भारत के एक वरिष्ठ मंत्री का नाम लिए जाने पर भारत सरकार क्या सोचती है, क्या कहना है विदेश मंत्रालय का। जाहिर है, नाम लिए बिना पत्रकार का इशारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर था क्योंकि उनका नाम कनाडा में हुई एक खालिस्तानी समर्थक की हत्या से संबंधित एक समिति में वहां के मंत्री ने खुलासा किया है कि अमेरिका के एक अखबार को उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम बताया था या फिर इसका खुलासा किया था, ये लीक किया था। इस पर रणधीर जायसवाल ने क्या कुछ कहा, आपको पत्रकार वार्ता में सुनवाऊंगा। इसके अलावा जगमीत सिंह, जो कनाडा के ही मंत्री हैं, खालिस्तानी समर्थक, कट्टर समर्थकों में से जाने जाते हैं, उन्होंने कहा है कि सिख जीनोसाइड के बयान को लेकर पार्लियामेंट में वो रिजोल्यूशन लाएंगे, प्रस्ताव लाएंगे। इस पर भी भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से सवाल किया गया। अगला सवाल था कि अमेरिका ने अभी एक दो दिन पहले ही 19 इंडियन प्राइवेट कंपनीज पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह टेक्नोलॉजी से संबंधित है। इस मामले में भारत सरकार क्या स्टैंड ले रहा है, क्या यूएस अथॉरिटीज़ के साथ कोई बातचीत इस मामले पर हो रही है और इस पर क्या असर पड़ने वाला है। इस प्रकार के सवाल भी पत्रकारों ने उनसे पूछे। अगला सवाल था कि अमेरिका भारत से जो इल्लीगल तरीके से अमेरिका में लोग गए हैं, भारतीय लोग गए हैं किसी भी कारण से नौकरी करने के लिए, रोज़गार के लिए या जिस भी दृष्टि से, उनको वो अब वापस भेज रहे हैं, भेजने की बात कर रहे हैं। इस मामले में भारत सरकार का क्या स्टैंड है, भारत सरकार ने क्या व्यवस्था की हुई है और यूएस के अथॉरिटीज़ के साथ, वहाँ के अधिकारियों या फिर मंत्रियों के साथ भारत सरकार की क्या वार्ता हो रही है, इस का खुलासा करने का भी, इससे संबंधित भी एक सवाल पूछा गया। आगे यूएस सैंक्शंस को लेकर भी एक और सवाल एक पत्रकार ने उनसे किया। कनाडा के मामले में रणधीर जायसवाल ने कहा कि जब वहाँ की एक समिति के समक्ष कनाडा के ही एक वरिष्ठ मंत्री ने इस प्रकार के अनर्गल बयान दिए हैं, उसको लेकर कनाडा यहाँ हाई कमीशन के ऑफिसर्स को भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय में तलब किया और उन्हें एक डिप्लोमेटिक नोट्स दिया गया, ऑब्जेक्शन यानी आपत्ति जताते हुए कि आपने जो बेसलेस बातें की हैं, इसका सीधा असर भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों पर बुरा असर पड़ सकता है, बहुत ही गंभीर परिणाम इसका हो सकता है द्विपक्षीय संबंधों को लेकर। और बहुत सख्त लहजे में भारत सरकार ने कनाडा सरकार से इस मामले को लेकर आपत्ति जताई है। उसके बाद अगले सवाल पर रणधीर जायसवाल ने कहा है कि यह कनाडा का गैर जिम्मेदाराना रवैया है जिसके सीरियस कंसिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं, यानी द्विपक्षीय संबंधों में दरार पैदा हो सकता है। उसके बाद भारत के पास कानूनी व्यवस्था है, भारत की कंपनियों ने किसी भी प्रकार का कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं किया है, ऐसा रणधीर जायसवाल ने कहा। उस मामले में, उस सवाल के जवाब में जिसमें पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि यूएस ने अभी रिसेंटली 19 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, यह मामला वास्तव में डुअल टेक्नोलॉजी के उपयोग का है। आरोप यह लगाया गया है कि वह रूस को भी इस प्रकार की टेक्नोलॉजी देता है या
उससे भी इस प्रकार के व्यावसायिक संबंध हैं। इस पर रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत की कंपनियों ने किसी भी प्रकार का कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं किया है और भारत सरकार यूएस अथॉरिटीज़ के साथ संपर्क में है, इसे सुलझाया जाएगा। उसके बाद जहाँ तक भारत से अमेरिका में इल्लीगल तरीके से गए हुए भारतीय नागरिक को वापस भारत लौटाने का सवाल है, इस पर रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस पर हम अमेरिका से लगातार डायलॉग करते हैं, लगातार बातचीत होती रही है और हमारा आपस का एक अरेंजमेंट है इस बात को लेकर कि कैसे उन्हें वापस किया जा सकता है, जो इरेगुलर वहाँ इमिग्रेशन हो रहा है या फिर इल्लीगल इमिग्रेशन भारतीय वहाँ गए हैं, उनको लेकर क्या कुछ है। भारत सरकार और अमेरिका सरकार के बीच में इस मामले को लेकर एक स्थापित तंत्र है, उसके अनुसार ही काम किया जा रहा है। उनसे यह सवाल भी किया गया कि कनाडा ने भारत को दुश्मन देशों की लिस्ट में डाल दिया है, इस पर भारत सरकार का क्या कुछ कहना है। जिस पर रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह एक साइबर अटैक से संबंधित मुद्दा है जिसको लेकर उन्होंने ऐसा कुछ किया है, जबकि इस तरह की कोई बात नहीं है। यह भी एक प्रकार से भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने का एक कुत्सित प्रयास है, ऐसा रणधीर जायसवाल का कहना था। उसके बाद सिंगापुर में अक्टूबर में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल और कनेडियन अधिकारी के बीच में जो वार्ता हुई थी, उसको लेकर भी कनाडा की समिति के सामने वहाँ की अधिकारियों ने, अटॉर्नी ने जो जिन बातों का खुलासा किया है कि इतने पेजेस के डॉक्यूमेंट उन्हें सौंपे गए थे, इसको लेकर भारत सरकार का क्या कहना है। इस पर रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार ने पहले स्थिति स्पष्ट कर दी है और बारंबार इस पर स्थिति स्पष्ट कर चुकी है भारत सरकार कि कनाडा सरकार ने कोई भी कंक्रीट एविडेंस अब तक निज्जर हत्याकांड से संबंधित भारत सरकार को नहीं सौंपा है, कोई भी ऐसा सबूत नहीं दिया है। उनसे इंडिया चाइना डिसएंगेजमेंट को लेकर भी सवाल किया गया और वीज़ा डिनाइल से संबंधित एक सवाल एक फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट ने उनसे किया कि चाइना के टेक्नीशियंस को भारत वीज़ा नहीं दे रहा है, इस प्रकार का सवाल किया गया। दूसरी तरफ जर्मन मशीनरी चाइना से भारत आने में देरी हो रही है, इसके इकोनॉमिक रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने के लिए, सामान्य करने की दृष्टि से क्या कदम उठाए जा रहे हैं और कब तक यह स्थिति हो सकती है, इस पर भी सवाल रणधीर जायसवाल से किया गया। आगे एक पत्रकार ने लॉरेंस बिश्नोई जो अंतर्राष्ट्रीय गैंग है, उसके भाई की डिटेल यूएस ने भारत को सौंपी है क्या, एक्स्ट्राडिशन को लेकर क्या कुछ स्थिति है, इस पर भी स्थिति स्पष्ट करने की मांग पत्रकारों ने की विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से। दूसरा, भारत की निजी एक कंपनी ने बांग्लादेश को कहा है कि पैसे दो और बिजली लो, इस पर भारत सरकार का क्या कहना है, क्या भारत सरकार को इसकी जानकारी है। इस प्रकार के कई महत्वपूर्ण सवाल आज वीकली प्रेस ब्रीफिंग ऑफ ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ऑफ MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के समक्ष उठाए गए और उसका उन्होंने माकूल जवाब दिया। आइए आपको सुनवाता हूं कि रणधीर जायसवाल MEA ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ने आज क्या कुछ कहा, इन सवालों के जवाब किस तरह से दिए, उनके पास वो कौन से तथ्य हैं, क्या सबूत हैं जिसके आधार पर वो कनाडा की सरकार के बयानों को अब भी झुठला रहे हैं, निराधार बता रहे हैं। सुनिए रणधीर जायसवाल को। Namaste and good afternoon, friends. I welcome you to this press briefing. Thank you for coming on a Saturday. We had missed out this week on this opportunity, so we are here and the floor is open for questions.
So we go here. Okay, Srinjoy. Sir, in these recent days, you would have noticed statements by Canadian government officials targeting a senior Indian cabinet minister. How do you react to it? This is Yeshi Seli from the New Indian Express. I also have a question on Canada. Jagmeet Singh has said that his party would like to introduce a motion to officially recognize the Sikh genocide in their parliament. Your reactions? Ayushi. So this is Ayush Jaiswal from ANI. What is India's comment on the recent sanctions announced by US against 19 private entities from India and 2 Indian nationals allegedly for dual-use technologies to Russia? And also, did this issue come up during the talks between our NSA, the telephonic talks held between our NSA and Jake Sullivan? Huma. So I'm Huma Siddiqui from the Financial Express. So the US has been sending flights repatriating illegal Indians from there. Has this been discussed again with the American side, because they had a press conference and they mentioned that there are several other Indians that they will be sending over a period of time? Elena, TASS News Agency, good afternoon. My question is also on US sanctions. Can they have any impact on business in India of Indian companies? And yes, will you discuss it with your counterparts and on the whole, what is India's position on such sanctions policy from American side? Okay. Thank you. So first, let's take Srinjoy's question regarding latest Canadian target. We had summoned the representative of the Canadian High Commission yesterday. A diplomatic note was handed over in reference to the proceedings of the Standing Committee on Public Safety and National Security in Ottawa on October 29th, 2024. It was conveyed in the note that the Government of India protests in the strongest terms to the absurd and baseless references made to the Union Home Minister of India before the committee by Deputy Minister David Morrison. In fact, the revelation that high Canadian officials deliberately leak unfounded insinuations to the international media as part of a conscious strategy to discredit India and influence other nations only confirms the view Government of India has long held about current Canadian government's political agenda and behavioral pattern. Such irresponsible actions will have serious consequences for bilateral ties. हमने कल कनाडा के उच्चायोग यानी दूतावास के प्रतिनिधि को समन किया था। 29 अक्टूबर 2024 को ओटावा में सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर स्थायी समिति कार्यवाही के संदर्भ में एक राजनयिक नोट उस प्रतिनिधि को सौंपा गया है। उस नोट में बताया गया कि भारत सरकार उप मंत्री डेविड मॉरिसन द्वारा समिति के समक्ष भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में व्यक्त किए गए अनर्गल और निराधार संदर्भों को कड़े से कड़ा विरोध करती है। कनाडा के उच्च अधिकारी भारत को बदनाम करने और अन्य देशों को प्रभावित करने की एक सुविचारित रणनीति के तहत जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को निराधार आक्षेप लीक
करते हैं, यह रहस्योद्घाटन उस दृष्टिकोण की ही पुष्टि करता है जो भारत सरकार लंबे समय से वर्तमान कनाडा सरकार के राजनीतिक एजेंडा और उसके व्यवहार के तौर तरीके के बारे में रखती रही है। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों से द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर परिणाम होंगे। Ishi, your question regarding certain celebration that you referred in the Parliament. All along we have been making our point very clear about our views very clear about extremism and the culture of violence and anti-India activities in Canada. This is our core concern with the Canadian government, and we hope that they will take action against these activities. That is how we look at it. The issue on the sanction of 19 Indian companies. We have seen these reports of US sanctions. India has a robust legal and regulatory framework on strategic trade and non-proliferation controls. We are also a member of 3 key multilateral non-proliferation export control regimes, the Wassenaar Arrangement, the Australia Group, and the Missile Technology Control Regime, and have been effectively implementing relevant UNSC sanctions and UNSC Resolution 1540 on non-proliferation. Our understanding is that the sanctioned transactions and companies are not in violation of Indian laws. Nevertheless, in keeping with India's established non-proliferation credentials, we are working with all the relevant Indian departments and agencies to sensitize Indian companies on applicable export control provisions, as well as also inform them on new measures being implemented that could impact Indian companies in certain circumstances. Regular strategic trade, export control outreach events for Indian industries and stakeholders are being carried out by agencies of the Government of India. We are also in touch with the US authorities to clarify issues. That also answers your question, Elena. On deportation of irregular and illegal Indians in the United States, you would have seen that recently we had some deportation from the United States. We have a regular dialogue with the United States on migration and mobility, and the idea behind that is to create more avenues for legal migration. And as part of this, our regular consular dialogue and arrangement, we have facilitated movement of people who are staying in the United States illegally or are part of irregular movement, and this has been going on for some time. We hope that with this cooperation and our engagement with the United States on mobility and migration, we will be able to deter illegal immigration. Do we have more questions? सर, कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो बातें कही या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं वो अपनी जगह पे है, उन्होंने हमें एनिमीज के कंट्री की लिस्ट में डाल दिया है। तो हमारे जो टाइज है उनसे ये कितना आगे तक चलने वाला है? Rishabh. Joint Secretary, good evening. Rishabh from Times Now. So I have 2 questions, both on Canada. One taking forward from Sharma sir. Sir, there is a report that suggests from Canada that India is involved in cyber attack on Canadian government institutions, and they have put us in a bracket which has North Korea, Iran, among others there, and China as well. So how do we respond to that? A, and B, there are reports that Indian diplomats in Canada are under surveillance. If we can have more details on that. Asli?
Mr. Jaiswal, this is Suhasini Heather from The Hindu. You referred to the demarche against the Canadian CDA on the basis of the officials talking about leaking reports. Now, in the reports that they have purportedly leaked is the description of a 5-hour meeting between National Security Advisor Ajit Doval and Canadian intelligence officials in Singapore. And they've given a specific date in October. I wanted to get a sense from you, firstly, did the NSA in fact meet with Canadian officials in October to discuss the case and in particular the details about a gang run by a man called Lawrence Bishnoi? And if so, I wanted to get a sense from the government if for the last year the government has consistently said that Canada has given no evidence, dismissed any allegations made by Canada in the Niger killing, then why did the NSA actually go all the way to Singapore to meet with Canadian intelligence? Thank you. Yes, this is Raghavendra Verma from ZDF German television. This is regarding India-China relations. So following the disengagement at the border, will the economic ties improve? Has some measures already been taken? There were reports of denial visa for the Chinese technicians in India. And connected to this is the conversation between the Indian and German ministers in the metro talking about the delay in the machinery from German machinery made in China to India. How serious is that and whose jurisdiction is it to speak to the Chinese about that delay? What the Germans will do or Indian government has already done, or what else is being done to normalize the economic relations, and will that happen follow up soon? Please. सर अशोक वजीरी से मेरे 2 सवाल हैं। एक, क्या यूएस ने अभी लॉरेंस बिश्नोई के भाई के बारे में किसी तरीके का डिटेल शेयर किया है फॉर एक्सट्रेडिशंस? मुंबई पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है। दूसरा, भारत की एक निजी कंपनी है जिन्होंने एक लेटर लिखकर बांग्लादेश को कहा है कि पैसे दो और बिजली लो, इसमें किसी तरीके की जानकारी एमए को है? दूसरा सवाल अब क्या था? एक निजी कंपनी है, एनर्जी कंपनी है, जिन्होंने ये कहा है कि बिजली लेना है तो पैसे दो। ठीक। मोहन एंड ऋषभ, आप दोनों का सवाल एक है कि कनाडा ने भारत को एक अलग किस्म के कैटेगरी में डाला है, उसके बारे में आप हमारी प्रतिक्रिया मांग रहे हैं। ये जो कैटेगराइजेशन उन्होंने किया है, ये अपने साइबर का उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया है, उसके तहत किया है। सो आई वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन फॉर ऋषभ, फॉर यू एज वेल। वी सी दिस अपीयर्स टू बी अनदर एग्जांपल ऑफ अ कैनेडियन स्ट्रेटजी टू अटैक इंडिया। ये भारत को एक तरीके से फिर से अटैक करने की एक रणनीति है। एज आई मेंशन्ड अर्लियर, देयर सीनियर ऑफिशियल्स हैव ओपनली कन्फेस्ड दैट दे आर सीकिंग टू मैनिपुलेट ग्लोबल ओपिनियन अगेंस्ट इंडिया। As on other occasions, imputations are made without any evidence. तो अनर्गल बात कह के मोहन जी और निराधार बात कह के आप हम पर आरोप थोप रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। Rishabh, on your questions regarding surveillance, yes, some of our consular officials were recently informed by the Canadian government that they have been and continued to be under audio and video surveillance. Their communications have also been intercepted. We have formally protested to the Canadian government as we deem these actions to be a flagrant violation of relevant diplomatic and consular conventions. By citing technicalities, the Canadian government cannot justify the fact that it is indulging in harassment and intimidation. Our diplomatic and consular personnel are already functioning in an environment of extremism and violence. This action of the Canadian government aggravates the situation and is incompatible with established diplomatic norms and practices. To answer your question regarding the meeting, yes, the meeting did take place. I had in fact
confirmed this earlier also in the earlier presser that we had. And I again reiterate that Canada so far has not shared with us any shred of evidence in the matter that you referred to. Raghvendra, on economic ties. Why would you meet with them? Sorry? There are several issues that you discuss when you meet. Raghvendra, a question on India-China economic ties. We had also issued a press release after our leaders met in Kazan. As agreed at the leaders' meeting in Kazan, relevant dialogue mechanisms at the level of foreign ministers and other officials will be utilized or used to stabilize and rebuild bilateral relations. We will let you know more when these mechanisms meet. We'll let you know when these mechanisms meet to deal with issues of each other's interest and concerns. So let these meetings happen, and then we'll have further developments in regard to the question that you asked. As far as development regarding machinery, etc. See, India-Germany collaboration or economic cooperation is a large canvas. We have several issues which arise from time to time. These issues are resolved, these issues are solved in an amicable manner. Hopefully, whatever issues that are there, it will also be resolved to the best of satisfaction of both sides. अशोक, आपने बात कही अनमोल बिश्नोई की. ये जो मसला है, इन सब चीज़ों पे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, छानबीन चल रही है, और इन सब बातों, ये सब जो बातें हैं ये लीगल डोमेन में आती है, और चूंकि लीगल डोमेन में आती हैं, जो स्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स है उसके तहत इस मसले पे कार्रवाई होगी. जहाँ तक आपने बात कही बिजली बांग्लादेश को बेचने वाली बात जो कही, ये मसला जो है दो पार्टी के बीच में है. एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है दोनों के बीच में, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरे गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश है. भारत सरकार इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई भाग, इस कॉन्ट्रैक्ट के में हमारा कोई रोल नहीं है, इसलिए मेरे पास आपसे इससे ज़्यादा शेयर करने के लिए कोई अभी इस वक्त कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. Abhishek. Hi, sir. Abhishek Jha, independent journalist. My question is regarding Canada. There are reports that Canadian government has reduced number of visas they used to issue to the Indians. And also, if you can share some insight on that. And also, recently, Canadian opposition leaders have cancelled a scheduled Diwali event in Canadian Parliament. So, if you have any comment on that. Keshav. Good afternoon, sir. Keshav Padmanabhan from The Print. This is also on Canada. The National Security and Intelligence Advisor at the hearing said that they had attempted to meet with the Indian side on the 8th of October, but no visa was given. And then on the 10th of October in New York, their officials appeared, but the Indians didn't come. And then finally on the 12th, they met in Singapore. So can you just sort of confirm whether this timeline is indeed correct, and if there are any comments or reasons regarding their allegations of the same, sir? Thank you. Neeraj. सर, अभी इजराइल में हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए हमले में 4 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है. चारों थाईलैंड के थे. भारतीय कामगार भी वहां काम करते हैं. उनकी स्थिति कैसी है? उनकी सुरक्षा को लेकर किस तरह से भारत सरकार नजर रख रही है? क्योंकि हाल के वक्त में भारतीय कामगारों वर्कर्स की संख्या भी इजराइल में बढ़ी है. क्या आप लेबनान की बात कर रहे हैं, इजराइल की बात कर रहे हैं? ठीक है. This is Tomomi Asano from the Japanese newspaper Yomiuri Shimbun. My questions are about the BRICS summit which happened last month. After the closing of the BRICS summit, some media are reporting that the names of the 13 countries listed
as partner countries. So I just want to know, is this list finalized or not? And if not, when? What is the remaining procedures, and when will it be disclosed officially? And I also want to know India's understanding for the definition of partner countries. What is the difference between the member countries? Thank you. Ajay. Sir, good evening. I'm Ajay Banerjee of the Tribune. I seek a small clarification. The Foreign Secretary in his press briefing at Kazan had said the right time will come for the regard to India-China talks for the next steps at the LAC. You just said that the bilateral meetings, let them take place and time will come. Have we set a timeline with the Chinese of the next two steps, the de-escalation and de-induction of troops around the LAC? Is there a timeline to it, or? You already asked a question. We'll come back to you. Abhishek, your question regarding Diwali celebration, which was cancelled. We have seen some reports in this regard. It is unfortunate that the prevailing atmosphere in Canada has reached high levels of intolerance and extremism. That is what I have to say in response to your question. The other question you also raised about reduction in number of visas by the Canadian government. We obviously are monitoring the well-being of our student community in Canada, as also the well-being of our professionals who are working in Canada. Our concern for the safety and security remains very strong. नीरज, ये बड़े दुख की बात है कि वहाँ पर इजराइल में हमले में 4 लोगों की हताहत हुई अभी, और वो थाईलैंड के रहने वाले, जैसे आपने बताया। हमारे तरफ से हमारी एक बड़ी समुदाय है वहाँ पर, करीबन 25 से 30 हज़ार लोग वहाँ पर इजराइल में हैं, काम करते हैं, कार्यरत हैं। हमारी जो एम्बेसी है, दूतावास है, वो उनसे लगातार टच में है। उन्होंने एक आपने देखा होगा कि ट्रैवल एडवाइजरी, और उनको एडवाइजरी भी दिया है किस प्रकार से अपनी सुरक्षा को बेहतर बहाल करें, और समय समय पर भारतीय दूतावास से वो टच में रहें ताकि हम उनका बेहतर ख्याल कर सकते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि हम लोग कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट भी हम लोग ने दिया था जो वेस्ट एशिया में वहाँ पर जो हालात हैं उस पर, तो मैं आपका ध्यान उस वक्तव्य पर आकर्षित भी करना चाहूँगा। On BRICS summit, yes, my understanding is that partner countries status, 13 countries were admitted as partner countries. This was a decision which was collectively taken by the BRICS countries. Partner countries is different from a full membership, that is what I understand. As far as whether this particular issue has been closed or not at this point in time, this is my understanding that these 13 countries have become partner countries. 1-3. Ajay, regarding a question about timelines of next steps, bilateral meeting, etc., at this point in time, I don't have anything to update you on. Uma, you heard something? So this is regarding Taliban's recent diktat, where they have said that they don't want, a woman to hear another woman's voice. And India has always been sort of talking about the welfare and empowerment of women in Afghanistan. What does India think about it now? Elena, you had something? I've got just one more question on this very important meeting which we all were witnessing on the sidelines of BRICS summit between Modi, Prime Minister, and Chinese President Xi Jinping. So it took place on the sidelines of BRICS in Kazan. So how was it organized? Can we speak about some kind of role of the host of the summit in this meeting? Like maybe some mediation role, or so how was it all organized in Kazan? Thank you. Rishabh?
So, can we have a confirmation that the disengagement in Depsang and Demchok area of Eastern Ladakh has been completed? And B, sir, there are reports and claims being made that there are towers being seen along the LAC. One of the footage also has captured that. If we can have some information on that, at what India know about those towers near LAC that is being presumed to be Chinese. Isham? Didn't answer my previous question. What? On the NSIA allegations at the hearings. Okay. So Huma, on Taliban, you are aware of our position. Our position on this particular issue is very well known. So that is where I'll stop. Elena, yes, the meeting of Prime Minister and President of China took place in Kazan. It was bilaterally arranged, and Kazan was the venue for it. This particular question was also posed to the Foreign Secretary, who responded very well in Kazan as well. Rishabh, on your question regarding disengagement and patrolling, you are all aware that on 21st October 2024, the last phase of disengagement was agreed upon between India and China. As a result, verification patrolling has commenced on mutually agreed terms in Demchok and Depsang. And as things move forward, we will keep you updated on this matter. Regarding the tower that you, sorry? Verification patrolling. It's called verification, yes. Verification patrolling in both places. The other issue that you raised, the tower, I don't have any. I'll come back to you on this particular matter. Keshav, these issues that you raised, these technical details I don't have, but I can tell you, as I've said, that the meeting took place in Singapore between our NSA and the Canadian NSA as well. With that, we come to the close of this press briefing. Thank you very much, ladies and gentlemen. आप सुन रहे थे भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल को, जो वीकली प्रेस ब्रीफिंग में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। पत्रकारों ने कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्रिक्स, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश से संबंधित कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए और उसका जवाब रणधीर जायसवाल ने दिया। और उन्होंने NSA की मीटिंग जो सिंगापुर में हुई थी उसको लेकर दोबारा फिर सवाल किया गया पत्रकारों के द्वारा। उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि मीटिंग हुई थी कनाडा और NSA इंडिया के बीच में, लेकिन उन्होंने कोई एविडेंस वहाँ निजर हत्याकांड से संबंधित नहीं दिया था। इजराइल में हिजबुल्लाह के हमले में हाल ही में 4 विदेशी नागरिक मारे गए हैं, जिनमें सभी थाईलैंड निवासी हैं। वहाँ भारत के 25 से 30 हज़ार लोग रहते हैं जो काम करते हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल किया गया था, तो उनका कहना था कि इसको लेकर वहाँ भारतीय राजनयिक संवेदनशील है, सतर्क है और लगातार उन्हें सुरक्षा से संबंधित एडवाइजरी जारी करते रहते हैं और उसकी चिंता कर रहे हैं। ब्रिक्स मीटिंग को लेकर भी सवाल खड़ा किया गया और उसमें 13 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने पार्टनर कंट्रीज़ के रूप में अप्लाई किया था एसोसिएट होने के लिए। उसकी क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है, इस सवाल पर रणधीर जायसवाल ने कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार सभी पार्टनर कंट्रीज़ पार्टनर के रूप में एसोसिएट कर लिए गए हैं। और जहाँ तक मेंबर और पार्टनर कंट्रीज़ में डिफरेंस का सवाल है, तो उन्होंने कहा कि इसमें डिफरेंट है। फुल मेंबर्स जो होते हैं वो अलग होते हैं और पार्टनर कंट्रीज़ की स्थिति थोड़ी अलग होती है और जिसको फाइनल कर लिया गया है। इंडिया चाइना टॉक्स के बारे में उन्होंने कहा कि बायलैटरल टॉक्स से संबंधित कोई टाइमलाइन अभी कि उनकी जानकारी उनके पास नहीं है जो पत्रकारों से वो शेयर कर सकें। तालिबान में रिसेंटली महिलाओं को लेकर अफ़गानिस्तान में तालिबान की ओर से महिलाओं को लेकर रिसेंटली जो बयान जारी किए गए हैं
उनके एम्पावरमेंट को लेकर भारत सरकार का क्या स्टैंड है, इस पर उन्होंने कहा कि भारत सरकार इस मामले को लेकर बेहद स्पष्ट है और महिला सशक्तिकरण को लेकर हमारी नीति जिस तरह से रही है ये सर्वविदित है। ब्रिक्स में मोदी और जिनपिंग यानी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत के और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में द्विपक्षीय वार्ता के आयोजन को लेकर एक विदेशी पत्रकार ने सवाल किया। उन्होंने कहा कि यह मीटिंग किस प्रकार से ऑर्गेनाइज की गई थी, क्या इसमें किसी ने मध्यस्थता भी निभाई थी, इसकी होस्टिंग किसने की थी। तो इस पर उनका कहना था कि ये द्विपक्षीय वार्ता थी और राजनयिक जो बातचीत हमारी होती है उसका एक अलग अगला स्वरूप था, तो इसमें किसी प्रकार के किसी मीडिएशन की कोई बात नहीं थी, द्विपक्षीय वार्ता थी। चाइना इंडिया डिसएंगेजमेंट की बात है जो डेमचांग और डेपचोंग से संबंधित है, उसको लेकर कि क्या वो डिसएंगेजमेंट हो चुका है और वहाँ पेट्रोलिंग की बात हो गई है, क्या इसके वेरिफिकेशन की स्थिति हुई है। तो उस पर उन्होंने कहा कि जब इस तरह की स्थिति, इसकी जानकारी आएगी तो वो पत्रकारों से शेयर करेंगे। इस प्रकार के कई महत्वपूर्ण सवाल आज इस वीकली प्रेस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से किए गए और उन्होंने इसका बेबाकी से जवाब दिया। लेकिन बहुतायत में इसमें कनाडा को लेकर सवाल किया गया और ख़ासकर चाइना इंडिया संबंध और भारत अमेरिका संबंध, ये तीन सवाल जो हैं, इन तीन देशों से जो कूटनीतिक संबंध है, राजनीतिक संबंध हैं, हाल के समय में जिस प्रकार के डेवलपमेंट देखने को मिले हैं उसको लेकर अधिकतर सवाल पत्रकारों ने पूछे और रणधीर जायसवाल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जवाब दिए। बहरहाल इस एपिसोड में इतना ही, फिर हम किसी बड़े नेता या किसी बड़े अधिकारी के बयान को लेकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और हम आपको अपडेट करते रहेंगे, हमारी यह कोशिश लगातार जारी रहेगी। बहरहाल आपसे गुजारिश है, अगर आपने द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर हमारी मदद करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।